नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द.eduMate पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे लेसन नंबर 12 द अनलकी फेस के वर्ड मीनिंग्स। तो आइए शुरू करें। आवर फर्स्ट वर्ड इज़ क्रैम्प्स, CRAMPS, क्रैम्प्स, एंड द मीनिंग ऑफ क्रैम्प्स इज़ सडन स्ट्रॉन्ग मस्कुलर पेन, जकड़न या खिंचाव, सडन स्ट्रॉन्ग मस्कुलर पेन। नेक्स्ट वर्ड इज वेल्ड, WAILED, एंड द मीनिंग ऑफ वेल्ड इज क्राइड, CRIED, क्राइड यानी चिल्लाया। नेक्स्ट इज शॉक्ड, SHOCKED, shocked, and the meaning of shocked is looked sad or upset, अचंभित, हैरान। नेक्स्ट इज कंसोल्ड, CONSOLED, कंसोल्ड, मीनिंग ऑफ कंसोल्ड इज मेड फील लेस सैड, यानी सांत्वना देना। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशनर, EXECUTIONER, executioner, and the meaning of executioner is a person who has the job of killing criminals, यानी जल्लाद। नेक्स्ट इज summoned, SUMMONED, and the meaning of summoned is sent for, यानी बुलाया। नेक्स्ट वर्ड इज इनोसेंट, INNOCENT, इनोसेंट, एंड द मीनिंग ऑफ इनोसेंट इज फ्री फ्रॉम गिल्ट, मासूम या निर्दोष। नेक्स्ट वर्ड इज इमीडिएटली, IMMEDIATELY, immediately, and the meaning of immediately is soon or at once, शीघ्र, तुरंत। And the last word is dragged, 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 pulled with difficulty, खींचा। तो बच्चों, ये थे इस लेसन के वर्ड मीनिंग्स। आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। तो सभी बच्चे इन वर्ड मीनिंग्स को लर्न करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।